एक हल तो ये है कि स्टैटिक राउटिंग कर लें, दूसरा हल ये है कि डायनामिक राउटिंग कर लें। पहले हम स्टैटिक राउटिंग से कर लेते हैं। IPv6 रूट, और हमें ऐड करना है वन का नेटवर्क, एंड नेक्स्ट हॉप is FEC0 10::1. This is the tunnel next hop, and this is the LAN subnet behind router 1. और सिमिलरली यहाँ पर हमें 2 का सबनेट रूट करना है, FEC0 10::2 पे, which is the WAN IP, tunnel interface IP of router 2. अब हम पिंग करते हैं between the subnets, so we are able to receive reply, but this is through static routing. We can enable dynamic routing here. So let's remove these static routes and enable dynamic routing. इसको enable करेंगे हम टनल इंटरफेस पे, और हम इसको enable करेंगे loopback 2 पे, because we want to advertise this LAN interface, emulated LAN interface over the tunnel interface. ओके जी, इसके बाद हम कहते हैं शो IPv6 रूट, so we are able to see V6 EIGRP route, and similarly we are able to ping between LANs now. अब यही EIGRP कॉन्फ़िगरेशन हमें बाकी राउटर्स पर भी कर देनी है। Loopback 2, which is our simulated LAN interface, likewise router 4. अच्छा जी, with this we are done configuring EIGRP. We should be able to see 3 routes. We are not able to see a route from router 3. Probably the interface has no IPv6 configured. It is there. We should be able to see this.
This tunnel interface has its V6 address configured as well. Okay, we figure it out. Before we move on, हम पिंग करके देख लेते हैं between the sites. R2 को हमने कर लिया, R4 को कर लेते हैं. That is pingable. R3 route is not showing up. Should come up. Okay, पहले हम spoke to spoke अपनी testing कर लें and then we look into it. This particular site is flapping as well, so that shows कि neighborship नहीं बन रही. R2 पे चलते हैं और हम R4 टेस्ट कर लेते हैं. This is spoke to spoke communication from R2. Now the reason of this communication not happening is कि हमारे पास EIGRP का रूट स्पोक का स्पोक में नहीं आया हुआ, तो हमें R1 के ऊपर V6 स्प्लिट होराइजन ऑफ करना पड़ेगा. Let's turn that off. No IPv6 horizon EIGRP1. So once we do it, we should be able to see other branches routes here. Except R3 that has an issue, we will look into it. This is spoke to spoke communication, which is now possible. लेकिन कहाँ से हो रही है, किस वाया से हो रही है? So we can see that the via of both of these is same. ये वाया हब हो रही है. So हम हब के ऊपर चल के नेक्स्ट ऑफ सेल्फ भी डिसेबल कर देते हैं. So now the next hops are different, and if we communicate, this is directly between R2 and R4. So I hope that makes sense कि V4 to V6 कैसे MGRE enable की जाती है. So we will look into this thing. I will keep this configuration as it is, and we will look into it why this is not coming up, and I will explain that next time instead of wasting time right now. Next जो possible configuration है हमारी, that is V6 to V6, यानी नीचे भी V6 है और जो राइड कर रहा है वो भी V6 है. दिस इज V6 to V6 टनलिंग. अब इसमें क्या चेंज आएगी? एनी क्लू? क्या चेंज आएगी इस कॉन्फ़िगरेशन में? अब हमें ये टनल बनानी है.
फॉर्मेशन टनल की ये है कि नीचे भी V6 है, यानी हमारा ISP जो है वो भी V6 एनेबल्ड है। सो वी हैव V6 वैन, और अब हमने जो कम्युनिकेशन करनी है उसमें आउटर हेडर भी V6 का है और पैसेंजर का हेडर भी V6 का है। सो दिस इज V6 ओवर V6। तो कहाँ चेंजेस करनी पड़ेंगी? मैपिंग V6 टू V6 होगी, करेक्ट। मैपिंग V6 टू V6 होगी, और ये जो हमने मैपिंग मैपिंग की है ये चेंज हो जाएगी। और आपको पता है हमारे जो वैन इंटरफेसेस हैं उनके ऊपर 2000 के आईपीस चल रहे हैं। The V6 WAN. Let's look at the base topology. So यहाँ हमारे पास WAN के ऊपर V6 भी enabled है. So our routers can talk to each other over V6 as well. This ISP is dual stack ISP. So 2001, 2002, 2003, 2004 ये हमारे IPs हैं WAN के जो कि configured हैं। तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या बिफोर टनल हमारी कॉन्फ़िगरेशन वर्क करती है। वैन टू वैन अंडरले चल रहा है हमारा। सो 2001::1, दिस इज माय ओन आईपी, नॉट दिस, इंस्टेड this is my IP, this is router 2 WAN, router 3's WAN, router 4's WAN. So V6 is ready, underlay is ready V6 का। तो यहाँ पर अब जो चेंज आएगा वो ये है कि हम लॉजिकल आईपी को एक्चुअल V6 के रियल आईपी के साथ मैप करेंगे, और जो मल्टीकास्ट सेंड की जाएगी वो भी V6 के आईपी पे सेंड की जाएगी, टनल की जाएगी। ये दो चेंजेस तो ऑब्वियस हैं कि हमें मैपिंग जो है वो इस तरह से करनी है। और कोई चेंज, एनी अदर चेंज? For this, any other change? इंटरफेस टनल 1 में इसके अलावा और क्या चेंज करेंगे? This is our configuration at the moment on hub. This is our hub configuration. और स्पोक की कॉन्फ़िगरेशन को भी सामने ले आते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब हमें जब हम चेंजेस करेंगे तो जाहिर है V6 टू V4 तो नहीं चलेगा। V6 टू V4 तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम जो मैपिंग करने जा रहे हैं वो अब डिफरेंट मैपिंग है।